मौज मस्ती मौज। If you all are chasing credit, don't do that. नाम तो सुना होगा। कॉलेज आए कुछ करने के लिए। बनाओ सीन क्या अब बोल एवरी सीन क्या So, cultural committee is basically our baby. We found it. We were the founder members, and it is actually a good thing that it was founded because it actually gave recognition to a lot of people who are actually working for the college events. Cultural committee, it's like a community who brings together everyone in the college to celebrate every culture there is. After the formation of cultural committee, it was actually like a place where, okay, I am a member. Now I can actually work and get recognized. So yeah, that is cultural committee. ये तो मुर्गियों के चूजे से संग एक दूजे के इधर उधर तितर बितर दौड़ते फिरे. Prior to the cultural committee, there was complete freedom. A freedom of where the admin would completely trust students, like one or two, and those one or two would like assemble whoever they want. Absolute freedom, imagine. Cultural committee was basically founded for that reason, so as to make it more structured and more like on paper kind of thing. On top of it, if we give it a cultural background, like people stay away from their homes for their colleges. So during this time they miss their home. Everybody is homesick, and different festivals that we celebrate at our home back should remain in their heads or with them. तो उस हिसाब से डेफिनेटली कल्चर हम लोग बहुत कोशिश करते हैं दैट इट वी ऐड कल्चर टू एन इवेंट. And the one good thing about MIT is that we have people from so many different cultures here that we all try to get to know about their culture as well as respect our own culture. Because सबको है कि ठीक है, I want to introduce my culture here or get to know about different cultures. So as a cultural event basis, our college is slain. कैमरा भी ट्विस्ट करना होता है ना मुझे. लेट्स गो. आज तेरा इंटरैक्शन पक्का. चिन्मय कुछ काम नहीं करता है. चिन्मय का टीम भी विजिट स्टॉल. चिल पिल एकदम झकास. Because you are not working. हाँ, because my work is on the spot ना. सब सॉटे. The BTS part is where you learn, where you do the most fun, more than the event itself. BTS में like अलग टाइप का स्टफ चलता रहता है. We actually know how and why the event is going on. We make ऐसा inside jokes बनते हैं and friendships बढ़ती है. मेन BTS में वो होता है. इवेंट में तो everybody enjoys. इवेंट्स बहुत बार ऐसा होता है ना कि इतने फ्लैशी होते हैं, यू डोंट गेट टू फुल्ली अब्जॉर्ब द इवेंट. तो बिहाइंड द सीन्स के कारण क्या होता है, यू आर एबल टू एक्चुअली अब्जॉर्ब व्हाट्स गोइंग ऑन बिकॉज यू सी दैट प्रोसेस बिल्डिंग अप एवरी सिंगल डे. तो जो इवेंट का एग्जीक्यूशन होता है, यू मच मोर एक्साइटेड बिकॉज आई हैव पुट इन द एफर्ट एंड नाउ आई गेट टू सी द होल पिक्चर ऑफ इट बीइंग प्लेड आउट. काय करताय डोळ्यात बोलताय है दिल में क्या क्या शुरू. लुप छुप देखे आंखों में झाके है दिल में क्या क्या शुरू. असं काय करताय डोळ्यात बोलताय है दिल में क्या क्या शुरू. लुप छुप देखे आंखों में झाके है दिल में क्या क्या शुरू.
मुझे बता जरा कहता क्या दिल तेरा इश्क का रंग अग बाय 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 Cultural committee in one word, huh? Diverse. आई हैव हर्ड काफ़ी पॉलिटिक्स चलती है, सो पॉलिटिकल कह सकते हैं. वाइब्रेंट. Cool. Best word. झकास. I think it's very unpredictable in a good way. Well, I find them always on the go and always make the environment very exuberant around them. एकदम हुला हुई. बोलते हैं ना राई का पहाड़ बनाना. आई फील लाइक डॉक्यूमेंटेशन टीम की कोई इतना वैल्यू नहीं करता है. फिर काम करने का मन भी नहीं करता बिकॉज द रिव्यूज आर मोस्टली नेगेटिव इवन दो वी वर्क सो हार्ड. I think somewhere CC does not consider CC documentation a part of CC. लाइक सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं तो फिर डिसीजन सबके रॉन्ग होते हैं, फिर मिसकम्युनिकेशन होता है. Hospitality लोग ही यूजलेस लगता है मेरे को कभी कभी इवेंट्स में. जिनसे मुझे Conflicts happen. Conflicts should happen. And there are some things that need to be very mature about. थोड़ा अप डाउन्स होता रहता है because obviously you're a part of, you know, a big team, you have responsibilities, but it's understandable. At the end of the day, whatever happens in CC, whatever ups and downs we go as CC, event के time पे वो नहीं दिखता है. Cultural committee is all about having the good bonds and everything, and which we always follow. Managing internal issues within everyone, plus managing politics and everything. कोणालाच कोणाच्या मध्ये दाबायचं नाहीये. सगळ्यांना कुठेतरी कशाना वेळी काम करायचं आहे. See, CC has its ups and downs, but at the same time, we know that we're the ones who are putting together these festivals and these events for students. So even if the downs are there, I enjoy the downs. थोड़े थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. CC has never been a committee, it's always a family. It's all about controversials, it's all about fun, it's all about having their own points in the committee. So, cultural committee had like only one goal, or I would say one dream, that students should enjoy. That's it. This one fact will stay along through, like, you know, MIT, which is cultural committee है नहीं, student council है नहीं, event जो होने के वो हो गए. कट